आउ के जॉइन करिवे गुड इवनिंग सर सर वॉइस टिके स्लो आछी वॉइस स्लो आछी नाउ इट्स ऑडिबल सर ओके ओके ठीक अछि आउ पिला जॉइन करिवे ना स्टार्ट करिया Good evening, sir. गुड इवनिंग तो गुड इवनिंग ऑल आमे ऑडिबल Yes, sir. ओके चलो वी विल स्टार्ट तो आप मानक सब तो फिजिकल स्टार्ट ही गले ना तो ह्यूमन ज्योग्राफी आज मैं इंट्रोडक्शन क्लास नबा तो ओरिएंटेशन क्लास आपण माने समस्त अटेंड करथिले यस सर Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके तो ठीक अछि वेरी गुड तो जनरली अप्रोच आपण माने कोड रखछन कहि परिबे किंतु मो तरफ सजेशन रहबो ह्यूमन ज्योग्राफी को चेष्टा करियो अधिक अटेम्प्ट करिया पई आउ इफ माने कोनोसी कारण जो यदि ह्यूमन रु कष्ट क्वेश्चन आछे देन फिजिकल को शिफ्ट हेबे ओके तो आमे कोन करिबा सर नमस्कार सर सीरियली क्रोनोलॉजिकली जिबा नमस्कार सर सर नंबर फर्स्ट क्लास कुहंतु सर मुडी फर्स्ट क्लास कोइ सर ओके ओके फर्स्ट नहीं क्लास एडा माने सिम्पली ऑप्शनल फर्स्ट इज ओके ओके नो प्रॉब्लम आमे तो फर्स्ट ही सर स्टार्ट करिया तो सर ओरिएंटेशन दिन किछि से सर विशेष किछि कोहाय नथला जनरली कोन होबो थैंक आपण जदि क्वेश्चन देखिथिबे प्रीवियस ईयर रो तो देखिथिबे जे आपण को कार्टोग्राफी 60 मार्क पळेला आउ रहिला आपण को तीनिटा 60 मार्क रो क्वेश्चन करियर अछि तो जनरल सजेशन एडा रुहे जे ह्यूमन ज्योग्राफी रो जदि आपण दीटा 60 मार्क रो अटेम्प्ट करचोंती तो मार्किंग पैटर्न टिके बेटर हुए ओके तो सेटा सजेशन अछि आउ एनी हाउ आपण को 20 मार्कर क्वेश्चन केवल आपण को ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट रो कवर करिया पड़िबो तो सेथि पे ह्यूमन ज्योग्राफी रो प्रति टॉपिक आमे भलो भाबरे डील करिया केतेटा पार्ट अछि जेमति पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी टिके बोरिंग लागिवो और ताकू 60 मार्कर पे प्रिपेयर करिया दरकार नहीं as such जदि आमे आपण को जति की मदर पॉसिबल मु गाइड कर देबी जदि आपण लागिवो नै आपण 60 मार्कर ताकू अटेम्प्ट करपियो देन वेल एंड गुड ओके तो आमे आज कोन करिया आमे फास्ट कोन करिया इकोनॉमिक ज्योग्राफी रु स्टार्ट करिया बिकॉज़ माने टोटल ह्यूमन ज्योग्राफी इकोनॉमिक ज्योग्राफी टिके इंटरेस्टिंग चैप्टर आपण को भल लागिवो इनिशियली तापरे आमे कोन करिया जो जो टॉपिक गुडा किछि टॉपिक ह्यूमन ज्योग्राफी रो पेपर 1 और पेपर 2 रो लिंक अछि से गुडा आमे साइमल्टेनियसली नै कि जिबा ओके सिलेबस समस्त देखि चंदी गोटे थोर प्रॉपर्ली Yes, sir. ओके Sir, human geography will be sir 60 mark question आसे ना आसे की? हां ह्यूमन ज्योग्राफी देखंतु आपण को टोटल केतरा आपण क्वेश्चन देखछन ना भलो भाबरे 8टा क्वेश्चन रहइबो 8टा क्वेश्चन आपण को 3टा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिया को पड़िबो माने 60 मार्क रु कहूची टोटल आपण जो 5टा क्वेश्चन करियार अछि हेलो ऑडिबल Yes, sir. Yes, sir. ओके देखंतु आपण को क्वेश्चन नंबर 1 कार्टोग्राफी 60 मार्क सेटा कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 5 आपण 20 मार्कर क्वेश्चन पचरंती चारिटा क्वेश्चन थिबो चारिटा रु 3टा क्वेश्चन करियार अछि सेटा होची कंपलसरी रिमेनिंग आपण को पाखे रहिबो 6टा क्वेश्चन रु आपण को करिया को पड़िबो 3टा क्वेश्चन तो आपण देखंतु इधर फिजिकल पार्ट रु गोटे करिवे किबा ह्यूमन पार्ट रु गोटे माने आपण क्रॉस करिया पड़े एई दो ह्यूमन रु जदी दीटा करचोती देन फिजिकल रु गोटे करिवे तो एमती करी 3टा क्वेश्चन करियार अछि जदि आपण प्रीवियस ईयर रो मार्किंग पैटर्न देखिवे मु मो पर्सनल एक्सपीरियंस रु कहूची जनरली ह्यूमन ज्योग्राफी रे टिके बेटर मार्क फिचिंग थाए कंपेयर टू फिजिकल पार्ट रीजन बीइंग बहुत सिंपल
देखंतु समस्त फिजिकल पार्ट अटेम्प्ट करिवे आ ह्यूमन ज्योग्राफी रो कोनोसी रेडिली अवेलेबल गोटे बुक गोटे सोर्स आपन जिंस मिलिबो नाही तो सेति पई आपन देखिबे जदि जते पॉसिबल ह्यूमन ज्योग्राफी को चेष्टा करिवे अधिक क्वेश्चन करिया पे माने दीटा क्वेश्चन करिया पे ओके सेटा हमें परे डिस्कस करिया मो तरफ गोटे एक्सपेक्टेशन रहइबो समस्त उठू जे मु मोर बेस्ट मु चेष्टा करी आपन को बुझिया पे आपण माने निज तरफ अफोर्ड देबे बिकॉज आमे एडी जहाँ भी बुझिया पे अधिक माने चेष्टा करे रादर देन कि जो कहना कि आपण मटेरियल सोर्सेस ए पछटी कम जिबे चेष्टा करिए बुझिया पे बिकॉज 60 मार्क क्वेश्चन लिखिया पे केवल 6 पेज आपण लिखिबार अछि से भितर आपण चाहिए डायग्राम करि पे डायग्राम मस्ट तीनटा डायग्राम रहिबो ही जेमते ले आमे से आडू को अधिक फोकस करिया रादर देन गेटिंग सोर्सेस एंड मटेरियल ओके चलो माने क्लास स्टार्ट करिया समस्त को प्रीलिम प्रिपरेशन चलची Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. प्रीलिम Yes, मेन sir. दीटा साइमल्टेनियसली नहीं कि चलिबे ठीक अछि तो आमे कोन करिवा आजी इकोनॉमिक ज्योग्राफी रो फर्स्ट स्टार्ट करिया गोटे इजी टॉपिक रु एनर्जी क्राइसिस आ एनर्जी क्राइसिस आपण को पढिबो पेपर 1 और पेपर 2 दीटा रे अछि पेपर 1 रो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जदि आपण सिलेबस देखिबे एनर्जी क्राइसिस गोटे टॉपिक अछि 2 to 3 टाइम्स पचारि सारिछि ऑलरेडी यूपीएससी 60 मार्कर क्वेश्चन अनुसार आउ पेपर 2 रे माने इंडिया ज्योग्राफी रे जदि आपण सेकंड चैप्टर देखिबे जोटा कि रिसोर्सेस अछि पार्ट 1 रो पार्ट ए रो रिसोर्सेस चैप्टर देखिबे सेठी भी एनर्जी क्राइसिस थिबो आपण को आ देखंतु एनर्जी क्राइसिस जदि क्वेश्चन आसीबो इवन से वर्ल्ड ज्योग्राफी रे आसु किबा इंडियन ज्योग्राफी रे इंडियन कॉन्टेक्स्ट को नै कि पचरिबो से तो आमे सेही टाइप रो पढिबा स्क्रीन विजिबल अछि समस्त को Yes, sir. ओके ठीक अछि Yes, sir. देखो तो एबे प्रियव्रत सर क्लास ऑलरेडी नै चंती सर कहिथिबे समस्त को जे स्ट्रक्चर ऊपर अधिक एम्फासिस करिया पई निश्चय भाबरे तो आमे कोन करिया स्ट्रक्चर फर्स्ट देखिबा जे जदी गोटे एनर्जी क्राइसिस पडुची तो आमे स्ट्रक्चर कोन रखिया फर्स्ट बुझी जे एनर्जी क्राइसिस कोन कोहंतु एनर्जी क्राइसिस माने जनरली कोन बुझुचंदी एनीवन Sir, energy creation रे बहुत सारे problems होचे और Okay, shortage fine. होचे से सब काहे के ठीक अछि एनी अदर से एनर्जी डेफिसिट होची इतकी डिमांड इतकी मिली पारने ओके वेरी गुड आउ आउ किछि कोंतु के किछि जाउछंती एनर्जी क्राइसिस माने कोन आउ फास्ट सेंस होची एनर्जी माने कोन बुझछंती माने एबे हमें जियोग्राफी रे पढुछु एनर्जी क्राइसिस हम को कॉन्टेक्स्ट रे देखिबा जिंसटा को Resource actually, sir. रिसोर्सेस There's, ओके energy रिसोर्सेस resources. कोन एग्जांपल कोंतु रिसोर्सेस कोन हे परिबो वेरी गुड हमें पार्टिसिपेटरी Petrol, अप्रोच रे करियो electro- जी जहां भाबुनी सब कोंतु Sir, economy resources. इकोनॉमिक रिसोर्सेस ओके इकोनॉमिक रिसोर्सेस रो एग्जांपल गोटे For example, sir, energy हमें use करके electricity produce करूचंती जहाँ पाई हमारा Okay, plants electricity. वगैरह work करूचे. Yes, sir. ओके वेरी गुड ठीक अछि ओके तो नटसेल रे हमें कोन बुझु Wind एनर्जी energy, माने sir. कोन एनर्जी होची गोटे टाइप सॉरी विंड एनर्जी Wind energy. Yeah. हां ओके ठीक अछि एटा भी गोटे पार्ट एनर्जी रो बहुत टाइप रो एनर्जी माने कोन बुझु एनर्जी माने गोटे पावर गोटे गोटे सोर्स ऑफ एनर्जी माने सोर्स ऑफ पावर जा फळे हम किछि गोटे वर्क डन करि परिया ओके सिंपलेस्ट अप्रोच रे कहया गले जदी एडी लिखा हिथिबे देखिथिबे एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ पावर सोर्स ओके जा फळे कि हमें दैट हेल्प्स इन डूइंग ए वर्क दिस इज वेरी क्लियर व्हाई वी कंज्यूम फूड in day to day basis because we require a minimum amount of energy to carry out our day to day metabolism process okay तो एनर्जी रो सिंपल जिंस होची इट्स ए पावर सोर्स
तो आमे एनर्जी क्राइसिस को केमती बुझबा जदी सही एनर्जी जो पावर सोर्स अछि ताको डिलीवर आमे करि परलेनी रिक्वायरमेंट अछि ता डिलीवर आमे करि परलेनी देन ताको आमे कहबा एनर्जी क्राइसिस तो डेफिनेशन आमे एमती कहि परिया जे एनी सिग्निफिकेंट बॉटलनेक इन द सप्लाई ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस टू द इकोनॉमी आमे ए केस रे इकोनॉमी कथा कहूचे माने मार्केट एबे आमे देखुना जेतबेले कोनोसी प्रकार ब्लॉकेड हैला फॉर से आम पाखे कौन हो पेट्रोलियम रो सप्लाई पहुंची पारुनी माने पेट्रोल बंक्स को से केस रे से माने कौन करिवे ब्लैक मार्केटिंग हबो बा एक्जिस्टिंग प्राइस अछि सेटा हाइक हबो तो ए केस रे इकोनॉमी माने कोन ए केस रे हमें कंज्यूमर कथा कहूछु किंबा जदी गोटे पावर प्रोडक्शन यूनिट अछि फॉर से गोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट अछि जदी गोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट को एनर्जी प्रोड्यूस करिया पे कोन दरकार ताको यूरेनियम दरकार एनरिच्ड न्यूक्लियर फ्यूल्स दरकार जदी सेही जिंस ता पाखरे पहुंची पाउनी देन आल्सो इट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी क्राइसिस ओके एनी डाउट No, sir. तो सिंपलेस्ट अप्रोच हमें कौन कहूछु जेतेबेले डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई डिमांड ऑफ एनर्जी इज ग्रेटर देन सप्लाई देन इट कॉज टू क्राइसिस ओके दैट इज द एनर्जी क्राइसिस तो हमें कौन करिया फर्स्ट हमें देखिए डेफिनेशन कोन तापरे हमें देखिया क्राइसिस काहाकू कहउचंदी नेक्स्ट वी विल कम टू द हेडिंग लाइक कॉजेस कोन तो कॉजेस को जनरलाइज्ड लिखिया पे हमें कौन करिया ताको प्रथमे डिवाइड करिया तो डिमांड साइड जदी सपोज डिमांड साइड रे कोन कॉज हेले हमरो एनर्जी क्राइसिस हो फर्स्ट इज हमें कहउछु ओवर कंजम्पशन एग्जांपल वेरी सिंपल for say a household is consuming 10 liters of a fuel for say petrol all of a sudden they started consuming 15 liters so now the demand is 15 liter but the production still remains at the 10 liter now it is also a situation of crisis clear next is the overpopulation suppose India's population is increasing suppose per decade for say 14% 15% 17% whatever it may be but our energy production is constant I'm telling a situation it's a hypothetical situation then also this leads to a crisis because here also demand is more than the supply next is climate extreme what is climate extreme suppose winter season is now it is a severe winter suppose this year now we will start consuming more heater then water heaters this all kind of heating equipments so that will requires more energy more electric energy to produce that electric energy we require extra bit of raw materials if that is not met with then this also leads to a energy crisis so this is some of the demand side problem we are citing over here if you find anything else also you can add it over here next is the supply side so now supply side we just like think in that prospect कि हमरो जो भी गल्फ कंट्रीज अछन जो माने हमको सप्लाई करछन जनरली एनर्जी इन द सेंस ए केस रे हम फ्यूल पेट्रोलियम सोर्सेस से कथा कहूचे जदि से मानन को ऊपर सैंक्शंस लागि जाउची एबे रिसेंट एग्जांपल कहार दे परियो हमें रशिया यूक्रेन वॉर चली छी सेति रशिया ऊपर सैंक्शंस रशिया तो हम परचेज कर obviously Russia to purchase kari so that also leads to a crisis situation next is the over exploitation what is over exploitation suppose we have a particular suppose kg basin all like ame samaste jani che na ki kg basin re kichi petroleum au kichi natural gases ro sources achi jodi over exploit koruchu taku within a particular time it will completely exhaust then we have to depend upon foreign resources so we are over exploiting in that particular situation so this also leads to a supply side problem next is the aging infrastructure what is aging infrastructure see one equipment is there that is producing xyz amount of final product so with the increasing age the efficiency of the equipment will come down so the production will also come down so in that case also the demand that particular supply will fall and it will lead to a crisis like situation next is the government policy change okay what is government policy change anyone what can be government policy change Sir, like reduction of subsidies or any kind of thing like that. okay that can be a point very good come up class participate kale bhalo lagyo jaha Sir, man se OPSC final exam एमिति कहि परिबा जेंति कि न्यू पाइपलाइन एस्टैब्लिशमेंट लाइक TAPI एंड नॉर्थ साउथ जो हमरो उटे पाइपलाइन एस्टैब्लिश करिया पे जाउतले like that or international level रे जहां भी से हमें प्रोक्योर करिया पे चाहते रिगार्डिंग दैट चेंज आल्सो
ठीक कथा एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज एनीथिंग आपण जेमती कहले इंटरनल डोमेस्टिक ही पारे किबा ओपैक नाम गोटे ऑर्गेनाइजेशन ना सुनथिबे आई गेस एवरीवन इज अवेयर ऑफ ओपैक व्हाट इज ओपैक Sir, organization for petroleum exporting country, I think so. Okay, that is fine. This is Organization for Petroleum Exporting Countries. So this is a OPEC. OPEC is a cartel. Cartel means all the oil producing company came up together so that they will assure like the demand, production will be kept constant. Once production goes high, then what will happen? Automatically price will go down. So they will not let that happen. So they are actually manipulating the market so that at the time of more requirement, they will intentionally brought down their production so that they will artificially make the crisis like situation, so they will get some monetary benefit out of the high petroleum price. Okay, so that is a government policy change. The similar can be attributed for the political crisis also. Okay, so this is a political crisis. Political crisis also you can link with the OPEC. Government policy change, as you already told, like okay, anything like OPEC is also a kind of, that is a government. Why? This is a intra-governmental organization because lot of countries and government are involved over there. So that is also a government policy change. Can be a political crisis. Means political crisis means suppose OPEC and OPEC plus. Have you heard about these two terms? What is OPEC and what is OPEC plus? Sir, OPEC plus to जानी. Okay, ठीक अछि. OPEC plus किछि नै सेठी रशिया को ऐड करछथि. Okay, Russia is not a part of OPEC country. Now what actually कोन करथला रशिया? सी रशिया ता पाखरे बहुत रिजर्व अछि. सी बहुत जिंस सप्लाई करे चेष्टा करे. जदि ताकू कार्टेल भितर को इंक्लूड न करिवे, सी इंडिविजुअली प्राइस मैनिपुलेशन को हबा को दबानी. तो ताकू भी नउथले से भितर. तो that also समथिंग now because of this Russia sanction, because of Ukraine war, that also a political crisis like situation because OPEC is also under the pressure. They can't include Russia right now. So OPEC plus is again converted into OPEC. Your class getting my point? Speed hi जाउछि कि स्लो करिया? Yes. Speed नहीं सर होछि? ठीक अछि. ठीक हाँ अछि. सर ठीक समस्त है फॉलो करछन. ओके, तो जहां जहां मैं पॉइंट डिस्कस करछे बिकॉज आई एम राइटिंग दिस ऑन ए पॉइंट फॉर्मेट. आई एम like I'm try to make you understand. Once you have understood the point, you can elaborate by your own way. Did not require to mug up everything because on the day of examination, before the day of examination, you are not able to revise everything bit by bit. So thing is like if you are having this kind of thing in your mind, so you can elaborate in the examination. Okay, so apart from these two, supply side and demand side, other situation can be like war and attack. War situation already we are like seeing. Attack means what? Suppose India have a pipeline. That pipeline comes through Pakistan or Afghanistan. Because of Afghanistan Taliban crisis, if Taliban is attacking on our pipeline, so that supply of energy to India is disrupted. So that also leads to a crisis-like situation. This is okay for everyone? Sir. Yes, sir. Next Yes, is sir. market manipulation. Market manipulation is simple. What? We are, suppose in India, we are completely giving freedom to private players. Okay, that is not in the case of India. So what they will make? So they will try to gain more profit. So they will artificially make the things like, okay, there is a shortage or crisis like situation by black marketing or hoarding. So they will manipulate and try to create a situation like crisis like situation. So will they get the more profit out of this energy crisis. Okay. Next is natural calamity like war, that is intentional damage to our infrastructure. The similar can happen because of natural calamity. If any calamity comes, suppose because of cyclone, all the coastal infrastructures, like already someone has told, like wind is also, wind power also, it is an energy source. Suppose all the turbines and towers that are being damaged because of natural calamity, that is also one point. And have you heard about this Fukushima Daiichi? Anyone has any idea what is Fukushima Daiichi? Sir, actually न्यूक्लियर हाँ, that is सर in न्यूक्लियर से Japan. शॉर्ट करते पड़ा लिखितला. हाँ हाँ एटा होची जापान रे गोटे प्लेस. सेतोल जापान, everyone knows Japan is situated on, why Japan is facing so much of earthquake chapter आपण कंप्लीट हो जाई छी. तो कहउतनी काहे कि जापान रे एते परिमाण रे earthquake आसे?
Sir, Japan is located nearest to Class? the ring Asterisk? of fire zone, sir. Ring of fire. Ring of fire. Okay. Yes. Okay, vicinity रे अछि. Very good. Why it is called as ring of fire? काहे कि ring of fire तो आपण टर्म रे कहि देले because एटा कोन होची से जगह ring of fire रे. The subduction So zone, sir. tectonic activity हाँ, active very होता good. है। Subduction between two plates. One oceanic plate is subducting beneath a continental plate. So that is the point. Okay, very good. आपण माने revise करछनी. Okay, so this is some kind of natural calamity. Fukushima Daiichi मु कहउतली तो Fukushima Daiichi रे कोन हेतला earthquake आसला nuclear fuel किछि स्टोर करथिले nuclear fuel गुडा को लीक हैला ता फडे तार जो nuclear waste रो जो repercussions अछि even एबे परजतो सेही गुडा को माने completely clear ही पारनी जदि recently आपण न्यूज़ को फॉलो करथिबे देन देखिथिबे जे किछि मास तळे सेही nuclear किछि waste गुडा को जापान को कहउछि धीरे धीरे पैसिफिक ओशन को डिस्चार्ज करूछि तो वर्ल्ड कम्युनिटी ताको अपोज करूछि बिकॉज़ आ फଳରେ पैसिफिक ओशन तो पॉल्यूट हो एंड लाइफ ऊपर तो इफेक्ट पड़ियो ओके एगुडा पॉइंट जहां भी करंट अफेयर्स आपण जानछन सेगुडा ऐड करि कर चलिए ठीक अछि सो दिस इज आल्सो ए क्राइसिस कॉज लाइक ओके आपण कथा कहउतल ना ह्यूमन ज्योग्राफी रे गोटे जिंस आपण को टिके इनोवेटिव होग पड़ियो क्रिएटिव होग पड़ियो बिकॉज़ यू विल नॉट गेट द डायग्राम्स रेडिली यू हैव टू मेक डायग्राम्स रेडिली यू हैव टू बी लिटिल इनोवेटिव इन द एग्जामिनेशन तो आमे जहां पे कॉज पढिले से कॉज को आमे एमती टाइप गोटे हब एंड स्पोक रे देखि परिया सो दिस इज एनर्जी क्राइसिस दिस इज सम इंडस्ट्रियल एक्शंस because of the so and so reasons this is the industrial cause already we have dealt with then is over consumption like cold winter we have already discussed this one then is infrastructure damage okay suppose whatever it may be because of we already talked about this point in detail next is political event like OPEC I have talked. Next is aging infrastructure, already dealt. Next, attack by terrorists like attack and war, that point we have covered. Another 2-3 spokes also you can add to this one. Up to this is clear. Anyone having any kind of doubt? किछि भी doubt अछि को slow करिवा No sir ठीक अछि ठीक अछि next is bottlenecks okay काहे की bottlenecks कथा पडला because on the definition itself we have written one thing it is a significant bottleneck in the supply of energy so already we have dealt with the causes demand supply and everything but what is bottleneck we have not defined okay now come to the bottleneck so what you understand by the bottleneck means these are the key pillars okay that are responsible for distributing or producing or refining your energy and they will ensure like it will reach to the end source like consumers from the production okay so in India we are importing only crude oil and we are refining because India have a very good refinery you like अपन समझते हैं चलिए इंडिया जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करछि से भितर बहुत बड़े बड़ पोर्शन इंडिया पुनी एक्सपोर्ट कर दिए एज ए रिफाइंड प्रोडक्ट इंडिया सब बड़ रिफाइनरी कोठी अछि सर जामनगर है हां जामनगर रिलायंस ओके ना ना दिग्बोई होची ऑयल साइट दिग्बोई रे अवश्य गोटे रिफाइनरी अछि बट दिग्बोई होची कोन तार की फीचर कोन पे आपण मन रखछन तो कोन दिग्बोई आसे मैपिंग रे बहुत रास छी दिग्बोई कोठी अछि ओल्डेस्ट ड्रिलिंग सर से तो सेटा आसाम सर ओल्डेस्ट हां oldest drilling oil drilling point 1866 I think okay this is oldest in Asia okay so that is आपण ठीक कथा कहले सेटा आपण मन रखिबे सेही पॉइंट रे कि आप जतले ऑयल सोर्सेस देखिबे ना फ्यूल सोर्सेस हमर कोन कोन अछि पेट्रोलियम सोर्सेस से भीतर हम दिग्बोई को ऐड करिया ओके सो दिस इज रिफाइनरी can be considered as a bottleneck next is port how is the port facilities because आमे सब पोर्ट रू ही थ्रू रे ही तो इंपोर्ट करछे बिकॉज़ सब गुडा जो आमे देखुछे जो मर्चेंट नेवी जो अछंती जो माने हमर ऑयल नै के आछंती सेने कोन पोर्ट एक्सेस करिवा थ्रू रे तो इंडिया को एंटर करछन ना तो दिस इज ए पोर्ट कैन बी कंसीडर्ड एज ए bottleneck if anything happens to the port suppose port रे जाबे डॉकिंग फैसिलिटी रे प्रॉब्लम हे गला then this can lead to a bottleneck kind of situation like it's a crisis like situation next is the poor distribution how can be poor distribution suppose रिफाइनरी रिफाइंड हे गला किंतु एबे सपोज XYZ जगह रे आपण अछन सपोज आपण अछन भुवनेश्वर रिफाइनरी अछि कि किंतु पेट्रोल हम यूज करछु नहीं सर पारादीप रे पेट्रोलियम हां पारादीप रे अछि
तो ओडिसा रे गोटे अछि केवल पारादीप रे, तो पारादीप रो ऑल ओवर ओडिसा को तो सप्लाई हो नथिबो, पारादीप सप्लाई करथबो किछि कोस्टल एरिया को, सपोज एबे सदर्न साइड रे रहिलो हमें तो आम पाखु किछि वाइजैक रो सप्लाई होतो, तो एमती टाइप रो चलथिबो। तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज डन either by the road, rail or any other means of transportation. So this is the, if anything happens to the transportation system, suppose road is having very tough rugged terrain kind of situation like in the northeast, so this can also be at, like termed as a bottleneck. Like what is chicken neck? Have you heard about chicken neck? Sir, nearest point connect with mainland of India to northeast region through Siliguri Northeast region. corridor. Through Siliguri corridor. तो Siliguri is in West Bengal. अपन जो कहले सिक्किम, एटा सिक्किम जस्ट तळु आछी, सेटा सेम देखिबे। ओके, तो एगुडा सब मैप रे एमती ही मन रखी देबे, आ एगुडा जदी इंग्लिश किछि आसे देन आपन को जेमती फिंगर टिप्स रे से आंसर हे जिवो। ओके, so this is poor distribution. अब बुझी गेले poor distribution कोन, और infrastructure damage. Infrastructure damage means any infrastructure damage, be it suppose आपन गोटे इवेंट आपन जेमती कहले नॉर्थ ईस्ट को, सपोज नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करछि किछि गोटे रिवर अछि, ता ऊपर कनेक्ट करछि सपोज गोटे ब्रिज देखि। ओके, सपोज ए ब्रिज जदी डैमेज हे गला देन तो कनेक्टिविटी सहित से पूरा डिस्कनेक्ट हे गला मेनलैंड सहित, तो सेटा भी गोटे टाइप रो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज रो एग्जांपल दे परिया। आमे जेमती बोटल नेक रो गोटे एग्जांपल दे परिया। बर्तन ए इंसिडेंट विषय समस्त सुनिथिबे, सुएज कैनाल रे जे ट्रैफिक जाम हेतिला। Sir, Yes, sir. ओके, कोन हेतिला, को शिप अटकी थिला सेठी? गोटे एवर गिवन कहि कि गोटे एवर, हां एवर गिवन। सो दिस इज एवर गिवन वाज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट दैट कंटेनर शिप, सो बिकॉज़ ऑफ द क्रॉस विंड। सो दिस आपन देखछन एटा सुएज कैनाल। सो दिस इज व्हिच सी, दिस वन where I am Red Sea, moving sir. my cursor Red right now. Sea. This is Red Sea, and this one is Mediterranean. this one is Mediterranean. this is Mediterranean Sea. Okay, so Red Sea is being connected with the Mediterranean Sea through a narrow canal. What is that canal? Suez Canal. Suez Canal. Suez Canal. Okay, so Suez Canal is under the administrative control of which country? Egypt. Egypt. Okay, Egypt. so हाँ, ए जो पोर्शन टा देखुछंती, जदी ए पोर्शन टा where I am moving my cursor right now, you can see this one. So this portion is called Sinai Peninsula. Have you heard about this point, this name, Sinai Peninsula? Yes, sir. Sir, Okay, so this if you heard about one more thing, like there is a 6-day war of Israel with the neighboring countries in 1968. Okay, so in that war what happened, this is Israel has gained control over this Sinai Peninsula, but afterwards it has given it back to the Egypt. Okay, so right now because of this Sinai Peninsula is under the Egypt, and that's why this Suez Canal is under the administrative control of Egypt. Okay, so because of this ever given was jammed, the total traffic which was supposed to come from either way, from the Mediterranean to Red or Red to Mediterranean, was completely blocked. Okay, so because of that one, lot of countries, generally this is a very important trade point, a lot of countries were facing some kind of difficulties. So this was also a situation you can cite in the example. This will like fetch you good amount of mark. Okay, next is a global energy crisis. We'll cite some example because we are writing in that fashion only. So global energy crisis in 1973, OPEC we have already discussed, which is OPEC. OPEC has they have increased their fuel price all of a sudden, because, and how they has increased, because already I have told एरा गोटे कार्टेल से कोन करे जानी सुनी कि तांको प्रोडक्शन को कम करंती, एम्बार्गो लगे दियंती प्रोडक्शन ऊपर, ता फळे तांको क्राइसिस, तांको माने आर्टिफिशियल डिमांड को से माने हाइक करिवे, ता फळे तार एनर्जी से माने प्राइसेस को बढ़ी देथिले। एडा गोटे सिचुएशन हेतला 1979 रे इरानियन रिवोल्यूशन हेतला। आउ एडा सुनथिबे जे ईरान होची गोटे मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री, बिकॉज़ ऑफ दिस इरानियन क्राइसिस, like this also in recent point we can add 2022 this Russia and Ukraine crisis, that is also one kind of energy crisis. 1990 रे गल्फ वॉर हितला, जे गल्फ कंट्री कुडा ऑप्शन तांको भितरे वॉर हितला, से पडरे मध्ये तांकर एनर्जी क्राइसिस, बिकॉज़ दीज आर द ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एंड 2005 to 2008 को हितला पुनी ओपेक तार सप्लाई कट करथिला, at same kind of situation in 1973. Next is 2015. This is very important, you should add this one because this is in respect to India. Have you heard this thing?
2015 रे इंडिया जानी सुनी कि नेपाल को सप्लाईज कट करथिला because by 2015 what India has observed, Nepal was shifting its interest towards China, and India, if you have like written any kind of sample papers, you must have written read this point. India have a big brother attitude towards its neighboring countries. Okay, so India don't like that approach of Nepal to teach it Nepal a lesson, so it has blocked its supplies, including the energies. So that time a artificial crisis like situation was created in Nepal. Next is the 2011-2021 Ukraine natural gas crisis was there. Sorry, United Kingdom natural gas crisis was there just last year. If by that time you might have heard this one, and recently you can add this one, Russia and Ukraine crisis. ठीक अच्छी अपन एबे पर्यंत पॉइंट बुझी पारले कोन हमें को टाइप रे पढचे फर्स्ट डेफिनेशन पढले कॉज लिखले कॉज रे हमें डिवाइड करले तीनटा पॉइंट रे ए टाइप रे गोटे एमसी टाइप रे हब एंड स्पोक टाइप रे हमें डायग्राम करिवा तबे गोटे बॉटलनेक्स विषय हमें देखिले एग्जांपल दे गोटे ग्लोबल एग्जांपल जोटा करंट अफेयर्स रे रिलेवेंट अछि नेक्स्ट इज ग्लोबल क्राइसिस ऊपर हमें लिखिबे ओके So current challenges for the India. By last year, India was facing some crisis-like situation. Why the crisis-like situation? Because of three reasons. This is a current affair like point. You can add this one just to add some more mark in your answer writing. Okay. Why it was happened? Because of the power demand has increased. आपन समझ सकते हैं जे कोविड टाइम रे जतले restrictions लागिला productions हाई थिला किंतु demand कमी थिला. Okay. Because प्रोडक्शन जेते भी सब इंडस्ट्री थिला सब शटडाउन हेतला रोड ऊपर बहुत ट्रैफिक नथिला किंतु जेतले हमें सेकंड वेव परे ओपन अप हला इकोनॉमी सेतबेले एनर्जी सॉरी हमर इकोनॉमी रिबाउंड हला जेते प्रोडक्शन नथिला तात अधिक डिमांड बढ़ी गला तो दिस वाज ए सर्ज इन पावर डिमांड दैट वाज नॉट एबल टू फुलफिल बाय आवर डोमेस्टिक प्रोडक्शन और व्हाटएवर द import of natural gases or fuel we are doing. Next is the flood in the mines. This was in relation with the coal, because in coal production India is almost self-sufficient. Apart from some of the steel plant coals we are importing from Australia, because Indian coal is having more sulfur in it that is not suitable for steel production. Okay, next is the La Nina cold winter. This was third point. Why La Nina cold condition? Because have you heard about this La Nina and El Nino? के भी जानते हैं विषय? Yes, sir. These Sir. are the south oscillation. Yes, sir. Southern oscillation, very So this good. is Walker Now, circulation. Walker circulation, wave sir. circulation is हाँ La Nina रे कौन हुई ब्रेक हो जाए ना इंटेंस हो जाए ना कौन हुई? Sir, if La Nina- El Nino is prevailing, then it will give us a good monsoon, and if La Nina Okay. is there, it can El Nino. break the monsoon. El Nino रे good monsoon El होगा? Nino, sir, it's opposite. No, it's opposite, sir. Sorry. Opposite. हाँ opposite. हाँ no. Sir, El Nino is Okay, supportive it's to monsoon season in India, and La Nina is opposite to that, of which de-intensify the monsoon in India. La Nina रे अब monsoon अधिक होगा ना कम होगा? Sir, ये strengthen होगा sir, कमी जीवो. कम Intensification कम है. हमरो monsoon कमी जीवो. अधिक La Nina रे. अधिक हबो सर हेले La El Nino Nina रे sir कौन? कम है जीवो. लाने से अधिक अपन- हबो El Nino sir good monsoon, good monsoon. El Nino. El Nino sir, El Nino रे sir, El Nino opposite. ये El Nino confuse year is bad for monsoon in India. La Nina is good, sir. Yes. Very good for India. Very good means we don't need that situation. India will experience flood like. That is also not good. Okay. So, अपन समझता है इधर ये part है ही ची El Nino La Nina part class रे Sir, hey sir. Yes, sir. है ची तो revise करना दी जड़ो ही आंसर दूसरे दी तीन जड़ो पूरा क्लास फॉलो करछन ना करना देखिए माने एबे कोन कहछ ना काको बोर लागु छी किछि टीचिंग मो पे भी नुवा एक्सपीरियंस तो किछि टीचिंग पैटर्न चेंज करिया किछि सजेशन अछि जहार कोन डाउट अछि आपण माने कहिले मु हेल्प करिया चेष्टा करिवि
कार किसी डाउट नहीं किसी चेंज करिया दरकार नहीं कल ठीक अछि मु भाबी कि चलुछि जे किसी चेंज करिया दरकार नहीं ओके हां तो जेतोले एई जिंसडा ऐड करिवे एडा केमिति करि परिबे गोटे टाइप रो केस स्टडी करिवे ठीक अछि एई गोटे पॉइंट रे प्रियव्रत सर कहि दिबे आपन केस स्टडी ऐड करिया पई Yes, sir. Yes, sir. ओके Whereas example ଥିଲା flooding mines ସେଟା ଟିକେ ବୁଝିଗଲାନି हाँ फ्लोटिंग माइंस ओके मु से कथा कहूँ देखो जो कोल प्रोडक्शन इंडिया ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट ओके ओडिशा रे छत्तीसगढ़ रे झारखंड रे झरिया ए सब रानीगंज एगुडा सब सुनिथिबे ई भेला जेतबेले एई थरो कहितली लानिना लाइक सिचुएशन हेतला तो लानिना फल रे एक्सट्रीम हमर रेनफॉल हेला ता फल फ्लड हे गला सिचुएशन पडा फ्लड लाइक सिचुएशन आसी गला जेतबेले फ्लड लाइक सिचुएशन आसे आपण भाबंतु जे कोल माइन रो जो स्लीप माने सिमलेस वे रे जो कोल प्रोडक्शन होतला हे परिबो की नहीं आई गेस नहीं सर एक्चुअली सर ओपन कास्ट माइनिंग गुडा डिसरप्ट होले हाँ इवन ओपन कास्ट माइनिंग न हेले मध्ये आपण जदि ओपन कास्ट माइनिंग अन्य जगह भी जे देखिबे जदि ओपन कास्ट माइन नाही भी देन भी जो अप्रोच रोड रहिबो ताकू से कोनसी पेव्ड रोड न थाए से सबले मड रोड किबा आपण कइति नॉर्मल रोड थाए जदि सेटा हेवी फ्लड लाइक सिचुएशन हबो सेठी केमिति आपण अप्रोच करिवे ऑब्वियसली सप्लाई तो कट हबो ना माने जदि 100 यूनिट्स प्रोडक्शन होउथिला से केस रे 80 यूनिट 70 यूनिट को आसीबो क्लास पूरा बुझी परछथि समस्ते सर ये एग्जांपल मतलब चाइना रे लास्ट टाइम भी एपे आसितला राइट एडा मु कंप्लीटली इंडिया पर्सपेक्टिव कुछ देखु जंते आपण हेडिंग मु देछि दिस इज कंप्लीटली इंडिया पर्सपेक्ट आपण को कामटे मु इजी करिया पे देथिली बिकॉज़ दिस इज ए केस स्टडी यू कैन ऐड दिस वन रेडिली एज ए केस स्टडी यू हैव टू मेक ए पॉइंट लाइक जस्ट पुट ए हैशटैग ओवर हियर इट्स ए केस स्टडी लाइक आपण एडा को अंडरलाइन करके बोल्ड लेटर करंतु तापे लिखिबे जे पावर क्राइसिस India was just facing a energy-like situation because of the coal supply disruption. What was the reason? Reason being power supply demand was all of a sudden increased because of the rebound in the economy post COVID-19 situation, second wave situation. Second point, flood in the minings. Because of this one, the coal supply was disrupted. Third one is because of the La Nina. Winter was more severe cold because we have already dealt with as it is a climate extreme-like condition. Climate extreme means we need more equipments, electric supplies to meet our energy demand. Okay, पूरा क्लास समस्त बुझा पड़ची Yes, sir. okay ठीक अछि so next time moving on to next thing so these are all the things we have discussed now we will see why India should be concerned like energy crisis ପାଇଁ काहे कि इंडिया concern रहिबा दरकार already इंडिया फेस करछि आगु भी फेस करि पारे because these are the points first thing is the India is the fourth largest energy consumer as of now. Next is India is supposed to be the third largest energy consumer by maybe 2030. That is a IAEA report. I'll let you know the confirmation. I don't know. This is the first thing. Fourth largest energy consumer as of now India. Second is India रो domestic production बहुत कम. गोटे केवल आपण roughly गोटे देखिया पे एटा ऐड करछि. This is the India map. This is a Cambay basin. Okay, we have some energy resources over here. This is where I'm moving my cursor right now. This is your Bombay High. You might have seen this one. So Bombay High is an offshore energy production system where we have petroleum and natural gases. Okay. KG Basin, Krishna Godavari Basin in the Andhra Pradesh. You might have heard this one. Next is the like our Kaveri Basin is there. Damodar Valley. This is our Mahanadi Basin. This is also some of the sources are over here. Then in our Assam and Arunachal side, this is Digboi, where I'm putting my cursor right now. This is Digboi. I don't have a pen right now. Maybe by next class, I'll try to solve that thing. Okay, so this is these are some of the limited and sorry. Apart from this one, in Rajasthan, some 2-3 points they have found in Banmer and that Bikaner Jaisalmer side. So those are very limited sites. So for our domestic demand, we have to depend on the foreign countries like Gulf countries, Russia, even on USA also. USA is the third largest like energy supplier to India right now. Next is energy, nuclear energy concern. See, have you ever noticed where how many nuclear plants are there in India? Any answer? Anyone knows? 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Okay, so in India there are 7 nuclear power plants are there. So mostly nuclear power plants we have kept near coastal region. Why? The reason is very simple. If any disaster happen, we will try to minimize the damage because it will be discharged towards the ocean. So we have a nuclear concern because of our past. Have you heard about this Bhopal crisis? Yes, sir. Yes, sir. What happened? Bhopal in the past? Sir, it was a gas leakage incident, I guess. It Gas was leakage written in incident. NCERT. Because Sir, urea you have read on the production NCERT. ଯେମିତି କିଛି ହେଇଥିଲା। यूरिया नुह एक्जाक्टली सेटा कार्बाइड जो यूनियन कार्बाइड पे गोटे कंपनी थे सी किछि से फर्टिलाइजर टाइप रो ही किछि जिंस जोटा कि हमें कहूछु काइंड ऑफ लाइक स्टेरॉइड फॉर द प्लांट्स से सेटा प्रोडक्शन करे से गोटे इंडिया रो अंडरटेकिंग कंट्री थिला मोस्टली ओनरशिप थिला यूएस पाखरे जो भी क्राइसिस हितला बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट फॉल्ट चुकु किंतु आज पर्यंत सेही माने से कंपनी आज पर्यंत तार रेस्पोंसिबिलिटी बियर करी नाही तो इंडिया से जिंसटा फील करिछि तो से एनर्जी क्राइ माने न्यूक्लियर एनर्जी पे हम सब कंसर्न अछि बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी फ्रूटफुल हबो ना नहीं ऑलरेडी फुकुशिमा रा में इंसिडेंट देखि छि इंडिया सो दैट वाज वन ऑफ द कंसर्न नेक्स्ट इज लैक ऑफ कैपिटल मींस सपोज हमें गोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट करिया तार गोटे फर्स्ट इन रिक्वायरमेंट कोन some crores of rupees so for suppose we want to establish around 50 hydropower project in a year so that much of capital India will be in demand of so already we have a 9% and more but current account deficit so that is one of the reason next is lack of share in the global production oil production this is not share oil production what is this point कि कहि परिबे ए जिनसटा lack of share in the global oil production वर्ल्ड रे जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज अछथि से मानो किछि स्टेक्स होल्डिंग करिवे इंडिया विषय जदि सुनिथिबे करंट अफेयर्स के फॉलो करथिबे वियतनाम रे इंडिया रे किछि स्टेक होल्डिंग अछि किंतु चाइना ताको अपोज करछि बिकॉज़ सेही स्टेक गुडा को साउथ चाइना सी रे ओपन होछि सिमिलरली सऊदी अरब रे किछि इंडियन माने किछि ऑफशोर एसेट्स अछि जो माने इंडिया रा कंपनीज किछि किबा किछि सब्सिडियरी कंपनी सेही माने ऑयल सोर्सेस गुडा को होल्ड करछथि बट कंपैरेटिवली जे हमें देखिबा हमर जते डिमांड अछि चाइना रो ए ग्लोबल शेयर होल्डिंग बहुत अधिक अछि यूएस रो भी बहुत अधिक अछि यूके रो गोटे आपण जदि देखिथिबे साउथ अमेरिका रो मैप जे देखिथिबे ए पाखरे गोटे साउथ अमेरिका रो ए पाखा गोटे आइलैंड थिबो फॉल्कलैंड आइलैंड एंड सैंडविच आइलैंड ए दीटा आइलैंड होची ऑयल एक्सप्लोरेशन पय तांको इंपोर्टेंट सेति पे एबे भी सेटा यूके रो ओवरसीज टेरिटरी से रखिछन so these are some of the points we can add so india hochi eguda concern new mane amo fuel pai next similar jinso energy रे केवल fuel आसीबो जरूरी न हमें इलेक्ट्रिसिटी को भी ऐड करि परिया फर्स्ट है जिंस होची हमें देखियो इलेक्ट्रिसिटी काहे के प्रोडक्शन स्लो इंडिया रे स्लो ग्रोथ रेट एंड लार्ज जेस्टेशन पीरियड फर्स्ट कथा जो भी प्रोडक्शन यूनिट अछि इंडिया रे तार कैपेसिटी हमें बढ़ी पारुनु लास्ट 50 इयर्स तले जहा थिला एबे से कैपेसिटी कमी जाई बट सेटा बढ़ी पारुनु नुआ प्लांट एस्टैब्लिश करजु सेटा अलगा कथा सेही पर्टिकुलर लोकेशन रे हमें नुआ टेक्नोलॉजी लगी की बढ़ी पारथांते बिकॉज़ अगेन इट कम्स इनटू पिक्चर द कैपिटल हम पाखरे कैपिटल रो प्रॉब्लम अछि नेक्स्ट होची लार्ज गेस्टेशन पीरियड जदि हमें कोनोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनिया को जाउछु it will take around 10 years 15 years 20 years so by that time that whole structure will be outdated okay excuse me नेक्स्ट है देखिए फॉल्टी प्लानिंग इन द सेंस सपोज न्यूक्लियर किबा एटॉमिक एनर्जी कथा में कहूछु हमें प्लान करछु प्लांट एस्टैब्लिश करछु बट से प्लांट रनिंग हे परनी काहे कि हम पाखरे एनएसजी मेंबरशिप नाही कि हमें ठीक टाइम में न्यूक्लियर पावर ताको जो भी सोर्सेस दरकार यूरेनियम दरकार किबा अदर किछि मटेरियल्स दरकार ताको हम सप्लाई करि परनु नेक्स्ट होछि लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन व्हाट इज लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखिथिबे इंडिया रे जे कोनोसी भी प्लांट अछि से तार 50% कैपेसिटी मध्ये चलेनी बिकॉज आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस हे पारुनी तार को प्लांट खराब पड़छि ताको रिपेयर हे पारुनी लाइक सिचुएशंस नेक्स्ट इज अगेन सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल प्रॉब्लम इंडिया रा मैक्सिमम प्रोजेक्ट हमें देखिथिबे सपोज फॉर एग्जांपल एबे बालीमेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जोटा सेडा बनाई छि कहार
इंडिया आउ यूएसएसआर मिसिकी बनिचंती जदि तार मेंटेनेंस हबो अपग्रेडेशन हबो यूएसएसआर रु आसीबे माने रशिया रु इंजीनियर्स आसीबे सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन डे टू डे बेसिस इफ यू नीड टू हैव a maintenance then you have to plan maybe 6 months prior so this is not going to happen breakdown to all of a sudden hobo na so this is one of the problem next is system and the transmission loss जानथिबे जदि ट्रांसमिशन लॉस कोन जेतोले वायर रे माने हम प्रोडक्शन सेंटर रु ट्रांसमिशन जेतोले करा होय जो केवी लाइंस गुडा को देखिथिबे स्ट्रीट रे थिबो सेउडा ओपन लाइन थाउची इंडिया रे जो ओपन लाइन रे कोन होय बाय द टाइम ये जेतोले ट्रांसमिट हबो एते हाई वोल्टेज ता हीट प्रोडक्शन पिया और सी हीट जो किछि लॉसेस वे एनर्जी जोटा कि हमको जो सपोज एबे 100 यूनिट आमे प्रोडक्शन कले जेतोले हम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट रे पहुंचबो से हमको 60 यूनिट हे तो 40 यूनिट्स आमे लॉस करी गले ट्रांसमिशन रे मो गोटे एग्जांपल पई ए फिगर गुडा को कहली न्यूमेरिक वैल्यू गुडा को एटा ट्रू नो नेक्स्ट इज द इंटरप्शन इन द फ्यूल सप्लाई जोटा एग्जांपल हमें 8 देखिथिले तम कहथिले फ्लडिंग इन द माइंस बिकॉज़ कोल सप्लाई केमते हम इंटरप्ट होतला ता फल रे एक पॉइंट को हम लिंक करि परिबा जे हमर जो कहते हैं इंटरप्शन इन द फ्यूल सप्लाई कोल ठीक से पहुंची परलानी गोटे थर्मल पावर प्लांट पाखे ऑब्वियसली तार ट्रांसमिशन माने प्रोडक्शन एबिलिटी कमी जिवो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल चेंज दिस इज समथिंग you can add this one आपण जे देखिथिबे सौभाग्य योजना के कहि पे सौभाग्य योजना कोन क्लास सर एटा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जोटा कि को जते हर घर बिजली योजना हम बोथिंग छै वेरी गुड तो ऑफर हम कोन कहूछु जति हम लास्ट 15 माने 5 to 7 इयर्स हम देखिबा तो रूरल रे इलेक्ट्रिफिकेशन गोटे हम काइंड ऑफ लाइक बहुत मात्रा रे पढ़ी छी आ फल रे डिमांड तो बढ़िला किंतु कोन सप्लाई माने हम सप्लाई से हिसाब रे बढ़ी जे कि बढ़ी नै तो ता फल रे कोन होचे हम स्ट्रक्चरल चेंज इन द सप्लाई एंड द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बीट एनर्जी और एनीथिंग so that also one kind of demand and supply mismatch and that can also be treated as a crisis like situation at least a cause of crisis okay so these are the points these are the concerns and everything we have dealt with now we'll see what government has taken steps to deal with this situation first is strategic oil reserve have you heard about this one strategic Sir. oil reserve कौन ये सब चंडीखोल लास्ट टाइम में भी आपन प्रोजेक्शन से केमती हां चंडीखोल रे प्रोजेक्शन अछि हां ठीक अछि एटा चंडीखोल रे एट लिखा अछि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व रे प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 दीटा फेज रे हवातला फेज 1 ऑलरेडी ऑपरेशनल अछि वर्तमान तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व माने कोन इंडिया कोन प्लान करछि किछि ऑयल लान के हमें गोटे किछि रिजर्व करी तक पाखे हमें माने गोटे टाइम पर सेफ हाउस टाइप रखि देबा इन द इवेंट ऑफ क्राइसिस लाइक सिचुएशन that is supply आसी परनी फॉरेन कंट्रीज जो भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज अछंती बाय द टाइम हम ए जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हम डोमेस्टिक मार्केट को सप्लाई करिवे इंडिया पकरे अवश्य एते बड़ सप्लाई नाही हमें हार्डली 6 to 7 डेज रो सप्लाई को मेट कर परिवा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व रे मे बी बाय द कमिंग ईयर वी कैन इंक्रीज दिस वन इंडिया माने गवर्नमेंट हैज प्लान्ड लाइक दैट सो ए तीनटा पॉइंट मन रखि देबे विशाखापट्टनम रे गोटे अछि मैंगलोर रे गोटे अछि आ पादुर रे गोटे अछि पादुर मैंगलोर तीटा को कर्नाटक रे एटा बहुत इंपोर्टेंट अपन मैपिंग पई आसीबो एमते ऑल ऑफ अ सडन पादुर आसीबो भाबुते कोड आसला कहि ओके नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट रे अछि जो अबे नेक्स्ट फेज रे से गोटे होची कोन पादुर रे आ गोटे हबो जो माने ब्लू कलर पॉइंट आ देखथिबे चंडीखोल ओडिसा रे गोटे हबो ठीक अछि नेक्स्ट इंडिया किछि स्टेक एक्वायर करछि माने साउथ ईस्ट एशिया और रशिया रे गोटे सैकलेन गोटे रीजन सुनिथिबे आपन को फार ईस्ट रे अछि तो सेही भी इंडिया रो किछि स्टेक अछि आपण कहउथिली साउथ ईस्ट एशिया रे जेमति कि माने हमरो साउथ चाइना सी रे भी इंडिया किछि स्टेक होल्डिंग करिछि तापरे नेक्स्ट होछि तापी एंड आईपीआई ए जेटा पाइपलाइन कथा सुनिथिबे ताजिकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया दिस इज ईरान पाकिस्तान इंडिया ए दिटा पाइपलाइन इंडिया प्रोजेक्ट करथला ताकि पाइपलाइन ही गले हमको आउ मर्चेंट नेवी ऊपर डिपेंड करिया को पड़िबो नाही सी ब्लॉकेज ऊपर किछि प्रॉब्लम हबो नाही एटा इंडिया प्लान अछि नेक्स्ट इज न्यूक्लियर डील इंडिया करछि किछि जापान सहित ऑस्ट्रेलिया सहित रशिया सहित यूएस सहित रिसेंट टाइम आ जदी खा सहित साइन करछ सेगुडा ऐड कर दे भितरे तापर कोन हबो इंडिया गोटे एनएसजी मेंबर नाही तथापि ए मानको थ्रू रु इंडिया किछि न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर किछि एनरिच्ड मटेरियल कलेक्ट करि परिबो ओके नेक्स्ट इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बीट अपन सोलर हो विंड हो किबा जियोथर्मल एनर्जी हो वेव एनर्जी हो किछि भी हो जहां भी जानचंदी सब जिंस
ए सब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कैटेगरी जाउची इंडिया बहुत गुडे स्कीम थ्रू रे ताको प्रमोट करची बर्तमान ओके नेक्स्ट इज सोलर पंप देखिथिबे सोलर पंप पई इवन ओडिसा भी किछि स्कीम्स रिलीज करची कि कोइ परि ओडिसा रा स्कीम कोन अछि जलनिधि 1 जलनिधि 2 केबे सुनचंदी यस सर ओके देखिदेबे जलनिधि 1 जलनिधि 2 कोन से सोलर पंप्स भितरे रेटेड हिक अछि ताको सोलर पंप माने केवल सेटा नै सेंट्रल गवर्नमेंट रा मध्ये स्कीम्स अछि इंडिया प्रमोट करछि इरिगेशन हवा दरकार सोलर पंप रे सो दैट विल सेव सम दिस कन्वेंशनल एनर्जी ओके नेक्स्ट इज हेल्प इज वन ऑफ द पोर्टल this stands for hydrocarbon exploration and licensing तो कौन हुए कि हाइड्रोकार्बन जो एक्सप्लोरेशन करा हुए एक्सप्लोरेशन रे बहुत खर्च हुए किंतु आगुरु कोन माने एग्रीमेंट थिला जदी कोनोसी भी प्राइवेट कंपनी फॉर से आपण देखिथिबे जो आपण कहथिले राजस्थान रे किछि ऑयल सोर्सेस मिलिछि सेटा कोन कहथला क्रेन इंडिया गोटे कंपनी थिला यूके बेस्ड कंपनी जाको परे वेदांत किन देथिला सी एक्सप्लोर करथिला किंतु जेहेतु इंडिया रे फाइन कला सी तो तार 60% एक्सप्लोरेशन राइट जीवो ओएनजीसी को ओएनजीसी गोटे स्टेट होल्ड कंपनी गोटे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आफर रे कोन होतला तार जे कंपनी जे पेरेंट कंपनी जे इन्वेस्टमेंट करची ए एक्सप्लोरेशन पई ताकू तार सही मात्रा रे प्रॉफिट मिल पाउनी इन दैट केस अगेन डोमेस्टिक प्रोडक्शन विल कम डाउन तो मेड लाइक टू एड्रेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन गवर्नमेंट हैज कम अप विथ ए हेल्प पोर्टल सो they will have a negotiation and some kind of final आमे एते भितर को जीवानी कोन होची कि आमे जानिथिला जे एटा कोन हेल्प पोर्टल कोन नेक्स्ट इज बायोफ्यूल गोटे एटा जानथिबे बरगड रे गोटे बायोफ्यूल रो गोटे सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट एस्टैब्लिश हेतला कहि कि के सुनिचे दे पॉइंट पीएम मोदी आस्तिले और आमे ऑडिबल यस सर सर फर्स्ट अनुगुल रहितला कि अनुगुल कथा तो मु जानि रे थरे बरगड रे ही सर से धर्मेंद्र प्रधान प्रथम इनागुरेट करे को आसीथिले जेटा ठीक थिला का 3 वर्ष अपन देखिबे मु जानि रे बरगड ही बरगड फॉर श्योर दिस वन अनुगुल आई डोंट सारो कारखाना पे आसीथिले हां सेटा अन्य किछि हिथियो बट दिस बायोफ्यूल व्हाट आई एम टेकिंग बिकॉज़ बरगड अपन राइस प्रोडक्शन भलो हुए तो राइस रे जो हस्क अछि ता ऊपर जो ऊपर कवर अछि ओडिया रे कोन कहति ताको तो सेटू सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल हबो बायोफ्यूल विषय आपण साइंस एंड टेक रे पढिबे टाइप 1 टाइप 2 माने जनरेशन 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन 4 कहि ता विषय देखि देबे कोन कहूची से गुडा को फूड मटेरियल रो किछि हबो किछि फूड वेस्ट रो हबो किछि माने जो हम कहउचंती कोन जेनेटिक क्रॉप रो किछि हबो तो ता से अनुसार तार कैटेगरी अछि ओके आपन को प्रीलिम रे भी हेल्प करियो थरे जस्ट गो थ्रू वंस व्हाट इज बायोफ्यूल एंड व्हाट इज बायोफ्यूल बरगड रे को प्लांट अछि ठीक अछि सर बरगड जोटा अछि एटा राइस स्ट्रॉ रो होची एटा हां हस्क रो होची राइस हां हां ठीक अछि सेति में ताको सेकंड जनरेशन कहउछन ना E2 बायो इथेनॉल ओके तो व्हाट इज इथेनॉल एंड व्हाट इज बायोडीजल क्लास टी कोन तो के कोन जानछनी व्हाट इज बायो इथेनॉल व्हाट इज बायोडीजल इथेनॉल टा सर पेट्रोल रे ब्लेंडिंग होबो जोटा अल्कोहल बेस्ड जो बायोफ्यूल जोटा बायोडीजल जोटा सेटा हमर डीजल रो गोटे वर्जन ला ओके माने सेटा गोटे टाइप रो बायोडीजल है सिंथेटिक तो बायोफ्यूल सर इथेनॉल भी आसुची और बायोडीजल भी आसुची सर आउडा जो जैक्ट्रोफा रो आसुची जो ऑयल टा हां सेटा कोन आसुची कहउचंती सेटा बायोडीजल मु पचर बायोडीजल आसे वेरी बायोडीजल सेटा प्रीलिम रे क्वेश्चन आसे एग्जैक्टली सर ओके तो एबे गोटे इंडिया गोटे टारगेट करछि जे आमे बायोफ्यूल रे माने हम फ्यूल रो सहित आमे ए बायोफ्यूल को गोटे ब्लेंडिंग करिवु परसेंटेज ऑफ ब्लेंडिंग और टारगेट ईयर एवडा देखिबे ठीक अछि मते लागछि 2025 थिला 2023 को नै के आछि एमती कोन 20% आउट 20% तो 20% ब्लेंडिंग विथ इथेनॉल माने पेट्रोल से तो ब्लेंडिंग 20% हबो और डीजल से तो 5% ब्लेंडिंग हो व्हाट आई रिमेंबर फिर भी आपण गोटे थोड़ा क्रॉस चेक करिवे ओके ठीक अछि नेक्स्ट इज फेम व्हाट इज फेम फेम एगुडा हमें काइंड ऑफ लाइक करंट अफेयर्स भी पढु छी सर एटा ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड फास्टर अडॉप्शन ऑफ समथिंग भूली रहता
सेटा हेवी Faster adoption of इंडस्ट्री sir manufacturing in electrical vehicles sir. हाँ हाँ एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो गवर्नमेंट कौन करछि आपण जदी ई व्हीकल परचेस करछन आपण किछि इंसेंटिव दोछि ओला व्हीकल एक्सवाइजेड जो भी व्हीकल हला तो मु प्रमोट करू परचेस ओला ऑन माय वर्ड्स ओके डोंट परचेस आई विल सजेस्ट डोंट परचेस ओके आउ कोछि परचेस करंतु फेम होछि सेही गोटे जिंस तापर हम कोन कहछु कि जो हमें कहछु क्रूड पेट्रोल ऑयल डीजल एगुडा का हमें कंजम्पशन कम हबो and emission also very less because of that one government is promoting this one next is prakash portal कोन एटा गोटे गवर्नमेंट पोर्टल करथिला हमें देखिथिले गोटे पॉइंट जे बेले बेले कोन हुए कि कोल सप्लाई पहुंची पारेनी ठीक भाबरे तो एटा गोटे पोर्टल जोटा मॉनिटर करे जे को प्लांट को कोल दरकार और केते कोल दरकार ताकू को टाइम भितरे पहुंचियो इट इज ए मॉनिटरिंग पोर्टल टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ कोल एटा को लिखिबे कोल okay so this is coal next is possible these are the things government has taken we will suggest some more things what we should government should come up with so that again this possible energy crisis situation will be avoided completely next is this is first thing we will go for more renewable energy government is already doing and again we should emphasis on more and more renewable energy रे example दे देबे जो भी जिंस अपन जानचंती wind हला hydroelectric हला किबा थर्मल हला सोलर हला आउ कोन हला जियोथर्मल एनर्जी इंडिया रे कोठी प्रोड्यूस हुए सर ए गोटे हला पोगा वैली जेंड के पोका वैली आउ गोटे सर पोगा वैली सर मणिकर्ण ना कोन गोटे अछि देखिथिबे मणिकरण हिमाचल प्रदेश में मणिकरण अछि ओके देखो तो क्लास समस्त को कहूची एगुडा ना इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा जतले डिस्कशन होची आपण जानि नाहंती किछि असुविधा नै कि तो एबे जति आपण कोटे भी रफली जति लिखि दोचो ताको मैप रे थर लोकेट कर देबे इट विल बी प्रिंटेड ऑन यू if at the any case this type of question is coming for mapping even in the prelim you will be getting readily some mark okay अब भाबंतु जे किछि आउट ऑफ द पॉइंट डिस्कशन होची this is renewable energy next is energy efficient product for से हमें कहूछु CFL यूज न करी कि LED बल्ब यूज करो why that is माने एक वेल एक्सप्लेन ताव जानि छ हमें जिनसटा what is BS6 engine is a more efficient engine गोटे कैटलिस्ट कन्वर्टर रहिबो जोटा कि एमिशन को कंट्रोल करछि समस्त जानथिबे ए जिंस गुडा डे टू डे यूजेस रे आछि नेक्स्ट इज एनर्जी सिमुलेशन प्रोडक्ट्स लाइक हम गोटे कंपनी अछि गोटे बहुत बड़ गोटे एस्टैब्लिशमेंट अछि सपोज सेठी कोन होछि दिन रात 24 घंटा वेस्टेज ऑफ एनर्जी होछि लाइट लागि थाउछि दरकार नै लाइट लागि थाउछि से केस जे हम एनर्जी सिमुलेशन यूज करछु हम जानिबा को समय लाइट लागि दरकार केते लाइट लागि दरकार ताको टाइमर डिवाइस रो सहित हम कंट्रोल करि परिबा नले किछि प्रकार सेंसर्स लगेदा प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स लगेदा तापर ऑटोमेटिक कंट्रोल हे परियो दिस इज आल्सो वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन नेक्स्ट इज वायर्ड केबल हम ओडी जिंस पढिथिले ना एनर्जी लॉस एंड ट्रांसमिशन लॉस ऊपर पढिथिले वो कौन कहथि ओपन वायर इंडिया रे यूज हुए ओपन केवी वायर यूज हुए जदि ताको हमें केबल्ड वायर यूज करिया केबलिंग जदि रहिबो ता ऊपर गोटे कवर रहिबो देन से जो एनर्जी लॉस अछि ताको मिनिमाइज करपिया नेगेट करपिया बट मिनिमाइज करपिया नेक्स्ट इज एनर्जी ऑडिट माने सपोज आपण के इजीएस्ट एग्जांपल घरे नियंतु सपोज आपण गोटे काम करछनी घरे एबे क्लास सरला परे फैन लाइट सब ऑन करके जाके सोई पड़िबे सकाळ उठिबे बापा देखिबे फैन लाइट ऑन अछि काल सकाळ गोटे एनर्जी ऑडिट हे जति तमे राती रे ऑन करिके पड़िथिलो काल सब नेक्स्ट टाइम आउ भूल करिए से जिंसटा जेतर बापा कहिबे थरे तो दिस इज ए एनर्जी ऑडिट माने गवर्नमेंट शुड कम अप लाइक व्हाट आर द थिंग्स व्हाट आर द पॉइंट्स वी आर डूइंग रॉन्ग सो दैट वी आर एनर्जी वी आर लूजिंग सम एनर्जी और वी आर मिसयूटिलाइजिंग द एनर्जी सो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग नेक्स्ट इज कॉमन स्टैंडर्ड ऑन द क्लाइमेट चेंज तो क्लाइमेट चेंज को जते पर्यंत ग्लोबली समस्त गोटे स्वर रे एक्सेप्ट करिवे तो कोन हबो आमे जो जिंस रिन्यूएबल एनर्जी आडू को जाउछु जो डेवलप्ड कंट्री अछि तांको कंट्रीब्यूशन करू नहंती तांकर जो मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन करू नहंती से जिंस को आमे एड्रेस कर परिबा सेडा सही जोटा एडा कहूची जदि बुझी परछन तेन आपण एक्सप्लेन निजे करबे व्हाट इज अ कॉमन स्टैंडर्ड ऑन द क्लाइमेट चेंज हेडिंग बहुत इंपोर्टेंट नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच एडा आपण आई थिंक सब जगह रे सुनुथिबे सब जिंस रे आमे लिखुछु सो जो भी जिंस आमे ऊपर पढिले सब को मिसे के सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो फर्स्ट डेफिनेशन केबे आस्थिला के दिथला एटा ओपीसी आई थिंक 3-4 थो पचार के प्रीलिम रे के जानचंती नाउ नेक्स्ट टाइम जीएस क्वेश्चन पचारियोनी नेक्स्ट टाइम की क्लास करियन ये जियोग्राफी क्लास ना जीएस क्लास चलची के जानचंती जाननाती मु कहली को कन्वेंशन कहतले
Brundtland. Very good. 1987 Brundtland Commission. ये कोई थी Brundtland. Okay, Brundtland Commission definition देइथिला, globally accepted definition. But for definition को देखिथे बडले multiple choice रे जो question अछि सेट लिखाइ थियो what is the sustainable development, which of the following is best suited as the sustainable development. Okay, मु कहिबी भूली जिवे आपण सेति थरे आपण नीचे देखिबे. Next is political directions. Political directions means what? See, government should go like focus more on the R&D for more efficient product. What can be the more renewable kind of products, so that we will minimize our energy wastage. Then waste to energy production is still at the very, like what you can say, embryonic stage in India. Why? Because of the efficiency. Waste to energy जब आपण produce करिए 1 unit, then maybe आपण 20 or 30 rupees per unit ro charges लागि जिवो. So that was the thing. If we will do more R&D on this one, then this can be a sustainable approach for the both आपनकर environmental solution पाइ मध्य energy crisis को deal करिया पाइ मध्य. Next is energy conservation obligation. Energy conservation obligation is what? Suppose किछि government रो obligation रहिबो जे जो भी MNC company अछंती XYZ amount रो जहार turnover होउची ताकू 20%, 30%, 40%, whatever it may be, एतिकी रिन्यूएबल एनर्जी यूज करिया को पड़िबो. जति गवर्नमेंट ए ऑब्लिगेशन दबो समस्त स्विच करिवे से जिंस को. TCS, Infosys, बहुत बड़ बड़ कंपनी, एप्पल, गूगल समस्त कर अछि ऑफिस इंडिया रे डेट रे. नेक्स्ट इज हाउस होल्ड कंजम्पशन. एबे घरे सपोज जहा घरे नै कि वर्तमान बहुत फैमिली अछन, सपोज तीनटा एसी लागि छि, तो तीनटा एसी जगह हम गोटे सेंट्रल एसी लगे परिया, सेंट्रलाइज्ड गोटे हीटिंग सिस्टम लगे परिया. तो तापर कोन होछि जो हमें हाउस होल्ड कंजम्पशंस रहिला सेगुडा कोन हे परियो. एडा बहुत बड़ बड़ एग्जांपल दे देली. इवन जो फैन हमें यूज दरकार नहीं, हमें तो बंद कर देले, तो एटा मध्ये गोटे हाउस होल्ड कंजम्पशन. एटीट्यूडनल चेंज इज मैटर्स मोस्ट. ओके, सो ए पर्यंत किछि डाउट? एटा टोटल हमें 60 मार्क एनर्जी क्राइसिस को डील कले. कहार किछि डाउट अछि पचरंतु ना आपन काहू लागु छि एटा 60 मार्क पय सफिशिएंट हबो नाही? किछि रेस्पॉन्स? सर फॉर एवरी टॉपिक हमको गोटे एग्जांपल दबा को पड़िबो कि? हाँ, आमे मो मो तरफ जति कि पॉसिबल मो आपन एग्जांपल कोइ जिबी. किंतु देखो जदि आपण बुझु चंदी जिंसटा, देन आपे आमे भी जति डिस्कस करले ता परे भी बहुत किछि जिंस आपण जतो करंट अफेयर्स पढिबे, जीएस पढिबे, बहुत जिंस आपण के एग्जांपल रे मिल जिवो. से जिंस आपण इनकॉर्पोरेट कर परिबे जदि बुझी चंदी जिंसटा. जदि केवल नाही पढी कि मगअप करके जाय चंदी एग्जाम रे डिफिकल्ट लागी. ओके सर. ओके, तो ह्यूमन ज्योग्राफी फर्स्ट क्लास डिफिकल्ट लागिला? No, sir. ठीक अछि. तो कहार किछि सजेशन मो पे एडा मु भी फर्स्ट टाइम क्लास मोजी, तो किछि सजेशन मु चेंज करिया दरकार. कि देखंतु समस्ते भलो भाबरे बुझिबे आमो अप्रोच सही जिंस. आ जहार कोनोसी डाउट अछि जदि मते कहिबे मु चेष्टा करी मो तरफरो मैक्सिमम एड्रेस करिया पे. सर गोटे पॉइंट रे एलाबोरेट जतले करूछंगे तो ता सहित एग्जांपल ला सहित रहइबो सटी भला हो. भूली जीव एग्जांपल रहिबो मु आपन मन जतले. रखी. ओके, माने आपण कहउचंती मु जतले कहूची आपण देखन सुनत मु गोटे जिंस कहूची. मु जतले किछि एग्जांपल कहूची किछि पॉइंट थ्रू रे देखंतु ए जिंसटा कोन मु आपण को एमटी कर, बिकॉज़ फर्स्ट जिंस ह्यूमन माने ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट रे आपण को वन सोर्स पॉइंट कोटे मिलिबो नाही. माने गोटे पॉइंट रे आपण सब सोर्स मिलिबो नाही. मु चेष्टा करिवि पॉसिबल मैक्सिमम जिंस आपण को हेल्प करिया पे. किंतु मु केते भी हेल्प कले जिंस सैटिस्फाई हे परिबो नाही जते पर्यंत आपण तरफु से टिके एफर्ट न रहिछि. हमें क्लास रे डिस्कशन करूछु जते बडे किछि किछि एग्जांपल हमें कहूछु, तो आपण चेष्टा करिवे से पर्टिकुलर हेडिंग साइड रे जदि किछि आपण जॉट करिया पे, देन आई थिंक आपण को मध्ये से जिंस परमानेंसी सहित मन रहिबो आ क्लास को भी टिके हेल्प होबो. बिकॉज़ देखंतु प्रॉब्लम एडा नाही जे मोडे लिखि पारिबि ना लिखि पारिबिनी. प्रॉब्लम एई जिंसटा होउची जे माने आपण देखंतु सब जिंस आपण निजे मन रखि पारिबेनी. मो कहूची कोन आपण जे बुझु चन जिंसटा, देन एग्जाम रे ही से जिंसटा आपण लिखि पारिबे. एबे जदि आपण बुझी गले कि एबे बॉटल नेक रे कोन आसीबो, पोर्ट सिस्टम रो कोन, पोर्ट रो अर्थ कोन बुझी गले, देन से जिंसटा आपण काहे घोषिबे एग्जाम रे जाई.
बिकॉज आमे Okay, आज sir, डेट रे sure, फर्स्ट पॉइंट रे अच्छे जेतबे बाय द टाइम आमे कोर्स कंप्लीट करिया आपण देखिए बहुत बल्की हे जिवो तो मु चेष्टा करछि आपण को बुझिया पे ताकि जते शीघ्र से जिनसटा आपण मन रखि दियंतु आ एग्जाम पूर्व आपण एटलीस्ट पॉइंट अप्रोच रे देखि पड़े तो बारंबार कहछि स्ट्रक्चर बहुत इंपोर्टेंट आ डायग्राम को निश्चय भाबरे इंक्लूड करिवे आ कार किछि डाउट अछि सर सर हाँ, गोटे कौन? क्वेश्चन थिला कि 2019 में भी गोटे क्वेश्चन आसला कि there are many roadblocks in unleashing the full potential of India's energy crisis. Justify the statement. So हाँ, a तो एबे question आमे टा जो जिनस केमिति अप्रोच कराबो जोटा में पढ़िले से एक्जाक्टली सेम क्वेश्चन आपण को ओपीएससी पचारछि आ देखंतु ओपीएससी आज डेट रे जदि जियोग्राफी रो माने क्वेश्चनिंग स्टाइल देखिबे स्ट्रेट फॉरवर्ड नाही आगु क्वेश्चन पचार थांदा एनर्जी क्राइसिस इलाबोरेट विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट 60 मार्क बर्तमान क्वेश्चन आपन को एई वे रे आसीयो जेमति क्वेश्चन 2018 रे पचारथला आई थिंक 19 में 18 रो क्वेश्चन थिला सेटा और 19 रे थिला हां 2019 रो 19 क्वेश्चन yes. थिला हां 19 रो क्वेश्चन थिला तो सेही जिंस जोटा पचारछि सेटा होछि एनर्जी क्राइसिस फर्स्ट जिंस आपन कहूछि से क्वेश्चन ता आप बुझियार अछि से एनर्जी क्राइसिस ऊपर पचारछि फर्स्ट डेफिनेशन जो जिंस हमें पढिले एक्जेक्टली सेम जिंस सेटा ही से कहिछि देखो नांती आमे विषय कोन पढिले कि एनर्जी क्राइसिस कोन एनर्जी क्राइसिस रो कॉजेस कोन ए जो कॉजेस गुडा देखछन ए गुडा सब गोटे तो बोटल नेक्स को हमें पूर्ण स्पेसिफाई करले जे को टाइप रा हमें बोटल नेक्स को ए टोटल जो जिंस गुडा डिस्कस करले सब ब्रॉडली कैटेगरी भीतर हमें एंटर कर परिबा एग्जांपल देखिले काहे की बोटल नेक क्रिएट होची ए गुडा एनर्जी क्राइसिस सिचुएशन हितला इंडिया पर्सपेक्टिव रे कोन देखिले बोटल नेक्स अर्थ कोन माने व्हाट आर द कॉज फॉर द एनर्जी क्राइसिस Yes sir. ओके माने क्लियर होची जिंसडा क्वेश्चन आपन को जे बुझिया पड़े जे जिंस कोन पचारछि आ देखो 2019 रे से क्वेश्चन पचारछि अन्य क्वेश्चन जदि आपन भलो भाबरे स्टडी करिए दैट वाज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इन द टोटल लाइक होल पेपर जे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिवो बहुत कम पिला अटेम्प्ट करियो जे क्वेश्चन अटेम्प्ट करियो जदि आपन कंप्लीटली ए कंटेंट रो जदि आपन 60% पे आपन लिखुचंती आपन को 40 रु 45 मार्क्स मिनिमम रे मो माने माने बहुत लोएस्ट साइड ऑफ मार्किंग रे कहूची it may go up to 50-55 also clear आउ कार कोन डाउट अछि ओके तो मु मो तरफ सजेशन पचर छै मो तरफ किछि चेंजेस दरकार एनीवन ठीक है एनी सर सजेशन ठीक अछि ओके ठीक अछि आपण माने बुझुचंती Yes, sir. Fine sir. ओके ठीक अछि देन चलंतु गुड नाइट नेक्स्ट विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास केबे अछि नेक्स्ट क्लास सर हमर जोला एनर्जी टा सर जो एनर्जी एटा जोला माने जेमति हां मैप रे एई जगह रो एती एनर्जी सेमति ले सर हां बढ़िया माने हां बहुत हां माने मने रोज पूरा फिक्स रहउजे जे एई जगह रो एई एती वाला आसाम साइड रो एती वाला कि हां ओडिशा हां हमर जो ये रो सर एती वाला कोस्टल एरिया रो हां एगुडो हां गुजरात जेमति हां थिला सर हमरो तो सेई हां जिंसटा सर हां भलो मन रहउजे से मैपिंग सिस्टम ना भलो ओके तो ठीक अछि माने आउ किछि ऐड करिया सर ठीक अछि जेतल सर जोटा ଟିକେ मैपिंग रे जणेले भलो हो से टाइप रे सर मैपिंग रे भी जेतले दरकार जो टाइप रो हां सेटा सर कहतले अधिया मन रहउजे सर ठीक अछि मु देखंतु मु मो तरफ चेष्टा करि जे मैक्सिमम जिंस मु मो तरफ आपन को कन्वे करबी किंतु आपण माने आपण तरफ जो जिंस सपोज किछि मन रहुनी भाबुचंती किछि एग्जांपल आपण को नुवा लागिला से जिंस जॉट करिवे निजे तरफ किछि माने टिके एफर्ट देबे ठीक अछि बिकॉज़ एंड ऑफ द डे आपण मन को स्टैंड आउट हबार अछि अन्य मान कंपैरिजन रे दैट कैन ओनली बी डन फ्रॉम योर एफर्ट आई कांट लाइक मु आपण को एग्जाम रे त लिखि परिबे ना ठीक सर अछि सर आपण माने थैंक यू सजेशन सबोले वेलकम रहबो काहारो कोन डाउट सबोले पचारंतु ठीक अछि नेक्स्ट क्लास केबे शेड्यूल Sir, केबे अछि नेक्स्ट Thursday. क्लास Sir, day after tomorrow. डे आफ्टर टुमारो ओके ठीक अछि वी विल मीट एट डे आफ्टर टुमारो सेम टाइम आई थिंक ओके चलन तो गुड नाइट Yes sir. Good night थैंक sir. यू ऑल थैंक यू सर थैंक यू सर सर हां कोन सर एमिति किसी मॉडल अछि कि जेमति कि एग्जांपल देबो कि एनर्जी कंजर्वेशन मॉडल जेमति कि गोटे पर्टिकुलर वर्ल्ड क्लास रे कि मॉडल अछि कि एमति एमति किसी नाही जस्ट जानियो था कि मतलब सेमि तो सपोज गोटे मु केबे जेमति किसी देखिनी मॉडल अछि कि कंट्री आगे
मॉडल कंट्री सेमती किछि करछि कि देखिया पड़े स्कैंडिनेवियंस वगैरह सेमती आपण सर्च करके केस स्टडी दे परिबे आपण जेम जोटा कहउछन ना माने जति आपण किछि केस स्टडी देखिबे मु तो सेमती कि करिनी केस स्टडी बट जति आपण कहले देखो दैट इज द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से लाइक आपण तरफ किछि नुवा जे आपण लागुछि ताकू आरएनडी करंतु टिके खोजिबे गूगल रे मिल जिवो से इनसो को इनकॉर्पोरेट कर देबे निजर जो भी हैंडआउट नोट्स जहां भी आपण रखुछोती ताकू केस स्टडी दे देबे किछि न हले ठीक अछि मोर देन वन केस स्टडी इज आल्सो वेलकम इन द एग्जामिनेशन किंतु सुपरफ्लस करिवेनी निश्चय भाबरे सर ये केस स्टडीज और एग्जांपल के डिफरेंस कौन से तो केमते देखा हो केस स्टडीज डिफरेंस किछि डिफरेंस किछि नहीं देखो एग्जांपल हमें जनरली कोन कहूछु गोटे सब पॉइंट को हमें एक्सप्लेन करिया पे एग्जांपल दोछु ठीक अछि जेहेतु गोटे 60 मार्कर 20 मार्कर क्वेश्चन अछि टोटल क्वेश्चन रो जो रेलेवेंस अछि सपोज एबे एनर्जी क्राइसिस पचारछि जदि से एनर्जी क्राइसिस को एड्रेस करिया पे आपण किछि गोटे एग्जांपल दोउछंती करंट सिचुएशन रे बा किछि गोटे कंट्री रो एग्जांपल ने कि जेमति कहउतले के कहउतले संतोष कहउतले आई थिंक ते जेमति कि किछि मॉडल्स दोउछंती कहा को गोटे कंट्री किछि प्रकार कंजर्वेशन करछि ता फल रे 20 इयर्स डाउन द लाइन किछि माने ताको इंपैक्ट पड़ी ता फल रे जेमति कि हमें देखथुलु महाराष्ट्र गोटे विलेज थिला सेटे ड्रॉट बहुत होतला माने अन्ना हजारे कोन कले गोटे कम्युनिटी को नेकी गोटे काम कले से वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कले ओके तापर रे कोन हला कि विद इन मे बी सम 5 to 7 इयर्स से एरिया ड्रॉट तो कमी गला से माने निजो पई सेल्फ सफिशिएंट हे गले क्रॉप प्रोडक्शन रे तो ए जिंसटा आपण जे साइट करिवे आकु एग्जांपल थोड़ी कहिवे आकु तो कहबे केस स्टडी जदि आपण वाटरशेड डेवलपमेंट जो आपण टॉपिक आसी पेपर 2 ता अगेंस्ट जदि लेखु छ जिंसटा को बुझी पारले देवस्मिता बजाउ यस सर ओके ओके एनी अदर डाउट कहा कुछ अछि नो ओके ठीक अछि चलो तो गुड नाइट